तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुरानिक डेवलपर इज़ वन ऑफ द ब्रांडेड डेवलपर एंड दे हैव many projects in Pune, in Thane, in Nerul and many places. They have their constructions going on and Puranik is one of the branded developer. Pune में इनका काफ़ी projects चल रहा है और दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट अभी तंते फ्लोरेज इसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कम से कम 10 लाख स्क्वायर मीटर का डिलीवरी अब तक दे चुके हैं और अभी भी उनके पास करीबन 5 से 7 लाख स्क्वायर मीटर का काम चल रहा है अभी एट प्रेजेंट। तो काफ़ी जगह इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जो भी प्रोजेक्ट पुरानिक डेवलपर जो बनाते हैं वो उनका फिनिशिंग टचेस, उनका जो बिल्डिंग का पेंट और जो उनका बाहर का फिनिशिंग, फ्लैट का अंदर का जो क्वालिटीज, एमिनिटीज, फिटिंग्स, जो ब्रांडेड फिटिंग्स वो देते हैं और उसके बाद जो अंदर की क्वालिटीज और कमिटमेंट, सबसे बड़ी बात जो है आफ्टर सेल सर्विस, जब तक सोसाइटी फॉर्म नहीं होती है, जो आफ्टर सेल सर्विस है दैट इज वेरी मच ट्रांसपेरेंट एंड वेरी क्लियर बाय दिस डेवलपर। सो I blindly believe in Puranik developer and they are doing a very good job by not even making these buildings high quality buildings and making the best quality building, but also by keeping the commitments what the client wants. So basically बिल्डिंग तो सभी बनाते हैं, प्रोजेक्ट तो सभी बनाते हैं, मैन्युफैक्चर तो हर चीज हर लोग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी। लेकिन क्या होता है कि आफ्टर सेल सर्विस काउंट्स, आफ्टर सेल सर्विस यहाँ पर हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन में यही आता है कि जब तक सोसाइटी फॉर्म नहीं होती है तब तक परचेस होने के बाद भी डेवलपर हैज टू गिव सर्विस एंड पुरानिक इज वन ऑफ द डेवलपर हु गिव्स आफ्टर सेल सर्विस टिल द सोसाइटी इज फॉर्म। और दूसरा इनका प्लस पॉइंट ये है कि जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो भी कारपेट एरिया की बात करते हैं, जो भी एमिनिटीज की बात करते हैं अंदर, वो सारा कुछ डेवलपर फुलफिल करता है अपना कमिटमेंट। ऐसा नहीं कुछ एग्रीमेंट में कुछ और लिखा है और आपको दे कुछ और रहे, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता है पुरानिक डेवलपर के साथ में, बिकॉज दे आर ब्रांडेड डेवलपर। और यहाँ पर भी इमेज में आप देखोगे तो दे गिव वेरी क्वालिटी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्विमिंग पूल भी आप देख रहे हैं, there is a flowing water from the rim that itself shows that you will get it fully. आप भले उसको नीचे, आप पानी को नीचे आप गिरा दो, basically it's a design I'm comparing with this swimming pool के developer will give you full. आप उसको नीचे पानी को नीचे गिराना चाहते तो आप गिरा सकते हो। So मेरा कहने का मतलब है कि even this image if you see over here, this is the high tech quality where the developer has given the like you can see it's a large size swimming pool developer has given in this complex, and there's a kids swimming pool also. There is a deck what I can see in this image, and it's a double heighted first floor club is there where vertical gardens are given on the clubhouse, and all the surrounding has been fitted with lots of, and all the surroundings have been given lots of trees are there in the surrounding area. Or I can imagine with this picture over here that when the night time, when there's a lights in this, when the lights are on, you can imagine the complex will look so glamorous and illuminating. So it will be very glamorous complex. So you can imagine from this complex. So this is one of the image. Let me share other picture also to you. So here also you see where you can see this is a walking track over here or jogging track over here, and on the one side there's a clubhouse and there's a sitting arrangement also outside. So evening time you can just come here, relax here. It's like a mini restaurant in the clubhouse itself. So you can come evening time, you can have a meetings over here, you can sit here, you can relax, you can chat. So this ये तो आपका अपना है, सोसाइटी के अंदर है. So this facilities you can usually use outside when any meetings are there with the जो घर से लोग काम करते हैं, they can come here and sit, और कुछ youngsters आके बैठ सकते हैं, even senior citizenship can come and sit over here. And they have designed very wonderful amenities has been given in this complex.
Here also you see the landscape has been designed very good. You can see जहाँ ऊपर की तरफ सीढ़ियों से रास्ता जाता है और फिर वहाँ नीचे किड्स प्ले एरिया है और फिर एक तरफ सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है। लेफ्ट साइड में आप देखोगे, यहाँ की तरफ आप देखोगे ये सीढ़ियों से भी रास्ता ऊपर जाता है। तो नॉर्मली बेसिकली क्या होता है कि जब हम कार अगर बेसमेंट पार्किंग, यहाँ पर जैसे 2 लेवल पार्किंग लेवल है इस बिल्डिंग में, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कार पार्क करके आते हैं तो ज्यादातर लोग पसंद करते हैं कि वो अपने लॉबी एंट्रेंस से ऊपर जावे और ना कि बेसमेंट के लिफ्ट को यूज करे। अगर कोई गेस्ट भी अगर घर में आता है तो लॉबी एंट्रेंस से एंटर करना बिल्डिंग के अंदर ज्यादा पसंद करता है, ना कि पार्किंग लॉबी से, क्योंकि वहां पर वो ग्लैमरस लुक नहीं आता। जब वो लॉबी एंट्रेंस से जब कोई भी गेस्ट घर पे आता है और जब लॉबी से एंट्रेंस करते हैं, लॉबी से जब एंटर करते हैं, तो वो एक फील अलग होता है और गेस्ट को भी अच्छा लगता है कि इट इज टेकन, द फ्लैट हैज बीन टेकन इन द राइट कॉम्प्लेक्स। बेसमेंट में हर एक बिल्डिंग में क्या होता है कि बेसमेंट तक लिफ्ट तो आ जाती है, आपको सुविधा मिल जाती है कि चलो आप बेसमेंट से ऊपर चले जाते हैं। लेकिन मेरे जैसा बंदा अगर बेसमेंट में पार्किंग भी करूं तो आई विल रादर वॉक टू द लॉबी, आई विल टेक द लिफ्ट फ्रॉम द लॉबी इटसेल्फ। So for that purpose, this staircase has been given over here. You can directly walk up to the lobby. You can park your car over here, and you can come out. You can walk to the lobby. And secondly, this staircase, this type of landscapes are designed for such a purpose where family or children's or anybody, evening time or any time when they come to the park or when they come in the clubhouse over here, they come from the lobby. They don't come from the parking. They come from the lobby, and from the lobby they come from the staircase. They come either to the gym or either to the kids play area or anywhere outside over here. So that is how you can take the fully made landscape facilities and the amenities. You can take the full fun of this type of amenities. Okay. ये मेरा मानना ऐसा है कि दिस इज हाउ इट शुड वर्क, और ज्यादातर लोग ऐसे यूज करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए डेवलपर ने ये सब लैंडस्केप को डिजाइन किया हुआ है। अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो दिस इज द ग्राउंड प्लेस ओवर हियर वेयर द लॉबी एंट्रेंस इज देयर। दिस इज द ग्राउंड लेवल, and from the ground level itself the amenity starts over here, and slowly from the staircase it goes down. तो सबसे पहला हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, यहाँ पर एम्पी थिएटर दिया हुआ है और यहाँ पर नीचे जो मैंने पहले आपको बताया था, फिर यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट है और फिर उससे आगे की तरफ आते हैं तो ये क्लब हाउस है जिसका आगे से एंट्रेंस है। दिस ट्रैक यू कैन सी, दिस ट्रैक इज अ जॉगिंग ट्रैक एंड वॉकिंग ट्रैक। दिस गोज होल द वे राउंड टू द clubhouse, and it comes from here, and you can see over here some people can jog over here, and if senior citizenship want to walk from here, they can walk also from here. So there's a jogging track and lots of greenery has been provided in the complex, and beside the building look, and it is with the deck. So you can imagine that each flat is given with the deck, so it's a huge flat and deck has been provided with all the flats. तो ऐसे फ्लैट्स में क्या होता है, जहाँ पर डेक होता है तो शाम के वक्त अगर कोई नीचे नहीं उतर सकते तो कम से कम वो बैल्कनी में आके गार्डन का लुक्स देखकर भी खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो बहुत अच्छा प्लीजेंट क्लाइमेट है और प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है। कभी बरसात के दिनों में भी अगर देखते हैं बाहर की तरफ, बैल्कनी के बाहर बैठकर अगर देखते हो तो यू लव दैट साउंड, यू लव दैट रेन, एंड यू लव सिटिंग इन द बैल्कनी हैविंग अ कप ऑफ टी ओवर देयर। दिस इज द इमेज ऑफ द डेक व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, एंड दिस इज अ ह्यूज डेक ओवर हियर। So either you can keep a hammock over here, or you can keep 2 chairs and 1 teepot over here. So anyhow you can use your deck if you want. And secondly, you can see this railing. Whatever I'm seeing, this railing, this is a high quality, high gauge railing is given in the complex. This is not a very low quality gauge. It's a very high quality gauge. These railings have been given. And where the slidings of the window, even if you बच्चा भी किसी अगर उंगली से अगर खोलना चाहे तो वो खुल जाता है. It's so you can imagine from this picture itself. And secondly, there's a vertical garden given over here.
This is the concept going on nowadays in many buildings. So this is vertical garden which developer has given over here, and this looks very decent. There's a false ceiling light are points already been given on the false ceiling. You have to just fix the lights over here. So this itself shows that balcony has given with the very good quality of tiles or maybe wooden flooring. I have to check this, but the vertical garden and hammock or two chairs or one seat over one tea table over here. So you can imagine the fun of the balcony. Take the full fun of the balcony. Again, this is the image of the complex, and you can see the decoration of the clubhouse, the vertical garden, and the paintings and everything. Even the lawn, the grasses are very well maintained, and you can imagine from this how the society will be and how the gentry will be in the society, and what type of complex Puranic developer is giving in, what type of quality Puranic developer is giving in this complex. Again, this is one of the image of the same complex, and it's a very beautiful image. And this is the image of the lobby entrance. So here also you see lobby is very well decorated with the already only you have to fix bulb to pehle se hi rahega yahan par. So it is the false ceiling. This ceiling is already a false ceiling. You don't have to do anything over here. Only thing यहाँ पर भी bulb लगा हुआ है. अगर कल को कोई bulb अगर fuse हो जाता, only thing electrician has to change the bulb. He don't has to do anything over here. So false ceiling has been already done. There is a vertical garden, and there is a good Italian marble is given on the flooring over here. And you can see the name plates is given of the stainless steel with high quality names. With very good quality names will be displayed on the board where the entrance. You can see the names of the members who have purchased the flat. Their name will be displayed in the very good manner in the proper steel plate, and this is the stone marble given on the wall. And again you can see the decoration and the sitting arrangement for the person who sits over here. Maybe he could be a security person or anybody who sits over here. So there's a provision, proper security is there, proper this is a gated community has been given in this complex. And you can see over here there's a vertical garden over here, and the lightnings and all the developer has provided on each and every corner. So the complex, the lobby entrance looks more brighter, neat and clean and brighter it looks. So this is one of the plus point of Puranic developer. जो उन्होंने इमेज में दिखाया है वैसे ही कॉम्प्लेक्स भी बनाएंगे. Again, when you see over here, this looks like a 7-star hotel. When you see over here the fittings of पहली बात तो टाइल्स की पहली बात तो जब हम लोग टाइल्स की बात करते हैं तो टाइल्स जो है these are all well quality tiles. The very best quality tiles has been given over here, and floorings are anti-skid tiles has been given on the flooring, and even the washroom, this tap connections over here, sanitary fittings and all. These are all branded fittings are there. This could be equivalent to Kohler or Jaguar or equivalent to that, but all branded quality fittings has been given. और with this only अगर आज मैं अगर बाहर जाता हूँ, अगर कोई बेस्ट क्वालिटी का अगर होटल भी अगर मैं किधर सपोज 4 स्टार 5 स्टार होटल भी अगर मैं पास करता हूँ कहीं पर आउट स्टेशन में अगर मैं जाता हूँ तो सबसे पहले मैं ये सारी इमेजेस देखकर ही पास करता हूँ, और जब मैं वहां पे जाता हूँ तो मुझे वही चीज मिलती है. So this image shows that this is the quality what developer is providing in the complex. Already phase 1 the possession has been given, and they are very happily staying in the phase 1. So friend, before we move further, I will show you this is the complex. This is phase 2 complex, and there was phase 1 complex somewhere over here which the developer has been already given the position of those flats. Now this is phase 2 in which these 2 building construction is going on. This 2 building construction is also going on, and these 2 buildings is launched now. Recently it is launched. So this is tower number 1, 2, and this is tower number 3, 4, and this is 5 and 6. So
This is tower number A, B, C, D, E and F. तो अभी जो बुकिंग चल रहा है वो इस टावर का चल रहा है. इसमें भी कुछ फ्लैट्स अवेलेबल है और इसमें भी कुछ फ्लैट्स अवेलेबल है. सिर्फ फर्क तीनों में इतना है, ये सारा कॉम्प्लेक्स एक्चुअली आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है, जिसमें ये 2 बिल्डिंग पहला शुरू किए थे, उसके बाद ये 2 बिल्डिंग किया था, उसके बाद अभी तीसरा जो है ये 2 बिल्डिंग लॉन्च किया है. तो इसको आप EF बोल सकते हो. ऑफ कोर्स ये बिल्डिंग का नाम आएगा पर अभी EF ही रखा है. जैसे इन दोनों का भी नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, बेलेज ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या इनका भी कुछ नाम यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत छोटे अक्षर में, तो मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है, पर अभी तो हम लोग इसको E और F बोल रहे हैं. तो होल कॉम्प्लेक्स इज Abhitante Flore by Puranik developers. Now when you see amenities over here, so there is a good balcony garden is there, there is a herb planters, then green entrance lobby, green peripheral boundary, then swimming pool, spa, interactive kids pool, courtyard gardens, sunning lawn, poolside cabana, EO pond, clubhouse, green wall at clubhouse, then BBQ corner, flora and fauna theme at children play area, pergola sitting, outdoor elderly nook, reflexology path, alcove with aromatic plants, yoga lawn, green meditation lawn, mixed garden, nature walkway, relaxation nook, fruit orchard, palm avenue plantation, dry stream, busky walk, rock garden, aromatic garden, youth corner, half basketball court, gateway water feature, green wall at main entrance, nature rich trellis, tipped planter, green amphitheater, cascading floor bed, butterfly park, and multi-purpose hall, swimming pool, children's pool, green play area, and kids play area. So many amenities developer is providing in this complex. So friend, this is what the amenities the developer is providing. And so friends, these buildings are 20-story buildings, 20 habitual floor with ground floor and 2 level of parking. So there are 3 level of parking. One is in ground floor and secondly is on first and second floor. So Puranik Abhitante Flore, it's a home that breathe, and the code name is Breeze at Bhavdan, Budrak, Pune. So developer has completed 4,21,000 square meters area across 29 completed projects, and 24 projects are ongoing with around 9,88,000 square meters. And these areas are Thane, Nerul, Lonavala and Pune. Slowly and slowly, one by bit, we will cover all the projects of Puranik and you will get all the information of Puranik. So today we are talking about Abhitante Flore. So let's see further, friends. So here you see all the ecosystems are very close by to this area. When you see over here, this is Puranik Abhitante Flore over here. And when you see, even if you see in the map, instead of reading over here, even if you see in this map over here, there is a Vidya Valley School over here. This is Mumbai-Pune expressway, which goes back to towards Mumbai over here. This is Wakad, Baner, and you have to come further over here. This is Bhavdan area over here, and these are the close by area like Hinjewadi. This is Baner Road, and there are lots of facilities and amenities are already there. This is already densely populated area. And when you see over here, there is a Crystal Honda showroom is there. There is a DSK Toyota showroom is over here. There's a Vidya Valley School, Symbiosis University campus, then Indus International School, and then if you go slightly distance, so there is lots of facilities already there in this area over here. So few to read out, I'll just read out to you. So here you see like schools like Sri Chaitanya Techno School is there, then Ryan International School, Sanskruti School, New India School, Vidya Valley School, and IT hubs like Hinjewadi IT Park, Cummins India, ICC Trade Tower, then Calsoft is one of, I can't read here properly, but it's Calsoft. Then Oracle is there. Then entertainment wise, they have home decor is there, more
Morris Supermarket is there, Oxford Golf Resort is there, City Pride at Kothurur is there, then Aditya Shagun Mall. These are all the entertainment wise near this Bhaudan. It is available inside Bhaudan. And banks are, of course, State Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, and Bank of Maharashtra. That in medical wise, healthcare wise, there is Chilaram Hospital, Opel Hospital, Chayadri Hospital, Mangeshkar Hospital, and Krishna Hospital. And restaurant wise, there's a D Palace, Up and Above, Trikya, BITS, and JW Marriott. So these are the few facilities which is ecosystem, you can say, which is closer to this complex over here. Now the favorite spot like Mumbai-Bangalore Expressway is hardly 2 minutes from here. Pashan is 5 minutes. Chandni Chowk is 5 minutes. Baner is 8 minutes. Kothurur is 18 minutes, and Hinjewadi is 20 minutes from this complex over here. So you can see everything is close by to this complex. There is nothing far. Ecosystem is very well developed, and once the complex comes up, so again the at the same time the infrastructure also keeps on developing, because जैसा अभी पूना में मेट्रो आ रहा है, मेट्रो शुरू हो रहा है, 2 या 3 लाइन मेट्रो की शुरू हो रही है, और पूना में दूसरा एक रिंग रोड जो है वो बन रहा है, करीबन 161 किलोमीटर का रिंग रोड होगा। तो पुणे में कोई भी लोकेशन पे आपको वो रेडियस क्रॉस करते हुए आपको नहीं जाना है, या डायमीटर क्रॉस करते हुए नहीं जाना है, आपको सरकमफ्रेंस क्रॉस करते हुए उस लोकेशन पे पहुंचना है, ताकि आप जल्दी उस लोकेशन पे पहुंच जाओगे। तो रिंग रोड जो है वो काफी मतलब ट्रैवलिंग में लोगों का टाइम बचाएगा, और रिंग रोड जो है वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर द पुणे पीपल स्टेइंग इन पुणे। और अगर हम लोग एयर पोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो एक होता है PM25, PM10 भी होता है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है, और ये भी सारे जो है एयर पोल्यूशन टेस्ट करने के लिए जो CO और SO दिया हुआ है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये पार्टिकल मैटर्स होते हैं। बेसिकली पार्टिकल मैटर्स ऐसा होता है कि जब एयर फिल्टर कुछ लोग लगाते हैं, जैसे हम लोग घर में भी कभी मुंबई में उतनी जरूरत नहीं लगाते, कुछ लोग घर में जिनको जैसा अभी पोलेंस भी होता है ना, जो पोलेंस होता है वो 2.5 पार्टिकल के जितना स्मॉल होता है, पार्टिकल मैटर्स बोलते हैं उसको, और 2.5 का उसका कैलकुलेशन होता है 2.5 का। तो दिल्ली में ज्यादातर एयर फिल्टर्स यूज करते हैं, और मुंबई में भी कुछ लोग एयर फिल्टर्स यूज करते हैं। पर पूरा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नेचुरल एयर है जो कि ऑलरेडी फिल्टर्ड एयर है। यहाँ पर जो आप इसका जो एयर मॉनिटरिंग रिपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय महाबल एनवीडियो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, व्हेन यू सी ओवर हियर everything's particle matters 2.5, particle matters 10, then SO2, NOx and CO, all this comes in between good and satisfactory gauge, where you can see good and satisfactory is a very, very good average. If you take the average also of this air pollution, so Pune is a good city to stay because the weather, because the climate is natural and it's fresh over there. मुझे तो खुद कई लोगों ने, बिकॉज आई हैव दिस आस्थमा प्रॉब्लम, तो मुझे कई लोगों ने बोला था कि आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम ट्रिगर नहीं होता है। तो मैंने एक बार लोनावाला भी जाकर देखा था और एक बार पूना भी जाकर देखा था, तो वहाँ पर मुझे कुछ नहीं हुआ था। लोनावाला में भी कुछ नहीं हुआ था, पूना में भी कुछ नहीं हुआ था, बिकॉज द वेदर इज सो गुड ओवर देयर। So this is the advantage of the city over here, where you can see you can see where the weather is natural clear. You don't have to fix a filter, any कोई भी टाइप का फिल्टर वगैरह, एयर फिल्टर आपको घर में लगाने की जरूरत नहीं। So this is the image of the ring road of Pune, which is 128 kilometer road. और यू कैन इमेजिन फ्रॉम दिस कि आपको कोई भी कॉर्नर में अगर पुणे के जाना है तो आपको बिल्कुल ऐसे बाहर आके आप ऐसे यहाँ से आप अंदर जा सकते हो। और यहाँ का खाली जो ये सारा डेवलपिंग एरिया है अभी, और ये टुवर्ड्स नासिक जाता है एरिया, और जो क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है ये चांदनी चौक है। सो हियर यू सी इट्स अ लार्ज डेक विद अ वर्टिकल गार्डन,
and there's a plantation also. So 24 hours you're getting good oxygen inside your flat because of trees and plantation. Again, a vertical garden with balcony, as I told you earlier. So you can plant over here aloe vera, brahmi, basil, and pudina. So these are some of the plants where you can plant at home itself. So this is a trend going on of vertical plant, vertical garden. This is a trend going on nowadays. So everybody is जो घर में ही थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लेते हैं, तो इस तरीके से करना ऑर्गेनिक फार्मिंग. एंड फाइनली वी आर ऑन द फ्लोर प्लान. So here, when you see the floor plan over here, so I will come to the area and the price later because that chart is separate. I can see separately and properly on that chart. But just to tell you that these buildings are having some wings. There are two wings basically. So one wing is having a combination of 2 BHK and 1 BHK. Another has a different combination. So this wing is having a combination of 2 BHK and 1 BHK. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 flats are there. Combination of 2 BHK and 1 BHK. I will come on the area and the price very soon. And the other wing, which could be E or F, वहां पर आप देखोगे तो ये भले पुराना दिया हुआ है जो बेलेजा और ब्रेजा का दिया हुआ है, पर सिमिलर टाइप ऑफ प्लानिंग रहेगा. तो उसमें जो कॉम्बिनेशन रहेगा 3 BHK और 2 BHK का कॉम्बिनेशन. सो दिस इज 1 BHK अल्टीमा का कारपेट एरिया और प्राइस मैं आपको बताता हूँ चार्ट पे. बट लेट अस सी हाउ द अल्टीमा लुक्स. अल्टीमा इज द foyer entrance. There is a living room and there is a dining table, kitchen with balcony, and a huge balcony with this flat, and 1 bedroom and washroom. Washroom is common over here, but the deck is huge because Pune people, they love huge deck. अगर deck वहाँ पे नहीं होगा, अगर balcony नहीं होगा, तो nobody likes the flat in Pune. So this is the biggest advantage, biggest plus point, that the balcony is very huge and it has given with 1 BHK also. Then we have 2 BHK. So again, you see over here, there's a living room, there's a dining space, and again a huge deck or balcony, you can say. 1 bedroom is attached, 1 is common, and this is study room, and there's a kitchen over here with utility room or balcony, you can see. So this is 2 BHK, and there is one more 2 BHK Optima. This is also very well designed. In this also there is a huge balcony given over here. So every flat has a balcony. And then 2 BHK Ultima. In this also you see there is an open balcony. Then there is a dry balcony with the kitchen, dining space, living, foyer entrance, 1 common washroom, bedroom, and this is attached. 2 BHK Superior, if you see. This is also a very good plan where you see over here, it's a rectangle hall and kitchen with dry balcony, 1 bedroom over here, washroom attached, and this is the common washroom, large balcony, and again 1 balcony with this bedroom over here. And this is the image of 3 BHK. 3 BHK, as you know everybody, there are 3 beds, 2 are attached, kitchen, dry balcony, and 3 balconies everywhere. 1 is with this bedroom, 1 is with the hall, and another 1 is with the bedroom. Terrace, open balcony, and open balcony. So friends, finally we are on the prices and the bonuses. So first we speak of the prices. So this is 1 BHK Ultima is around 488 carpet area, where the price starts from 43 lakhs onwards and it goes up to 44 lakhs, depends on which floor you buy. Then 2 BHK Optima price carpet area is 596 to 616, and price starts from 55 lakhs to 57 lakhs. And 2 BHK Ultima 691 carpet, where price starts from 61 lakhs to 63 lakhs. And 2 BHK Superior is 733 carpets from 65 lakhs to 67 lakhs. And 2.5 BHK Superior, which is 867
price is 83 lakhs to 85 lakhs. Now this offer is valid till 14th October. So what offer is valid till 14th October? That I'll just read out to you. And it's raining over here, so there will be a slight noise. I will try to reduce the noise from the audio, but then it's raining outside. So in my audios, you might hear the rain sound, but I will try to reduce the sound as much possible it can be. And when you see over here, you have to make a token amount of only 72,000 and you book the flat in this complex. Now, developer is providing bonuses in this. The first bonus will be of modular kitchen, which developer is providing on the booking of 72,000 rupees. And the second bonus is that moment you get the allotment letter within 7 days and you get your sanction letter, if you get your bank sanction letter of 90% or whatever it is. So developer is giving you 20,000 rupees more discount on that. And the third thing is that moment you get the sanction letter and on the same day you give the stamp duty and registration check, or you do the stamp duty registration check on the same day. So you get again 40,000 rupees discount. And when you complete all three things at time, like suppose you get the allotment, when allotment letter you get the sanction letter, and on the sanction letter you get stamp duty registration. So all these things has the developer tells you, and you keep on the processing fast. So that time you get 20,000 rupees, you get 40,000 rupees, you get modular kitchen, and plus the 72,000 जो टोकन आपने दिया है वो भी आपको रिफंडेबल है। मतलब कहने का मतलब ये है, आप इन शॉर्ट अगर समझना चाहते हो तो ये समझिए, इस फिगर को आप समझिए। ये 43 लाख का जो फ्लैट है वो आपको 41 लाख में आकर फिगर जो आपका फिगर आएगा वो 41 लाख तक आ जाएगा। सीधा आपको 2 लाख का डिस्काउंट है। पर ये 2 लाख के डिस्काउंट में जो आपका मॉड्यूलर किचन है वो आपके बोनसेस में इंक्लूडेड है। अगर आप समझ लो सीधा आपको 2 लाख का बेनिफिट मिलता है, आपको मॉड्यूलर किचन 72,000, 20,000 और 40,000 का बेनिफिट आपको मिलता है, तो मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ कि इस 43 में आपका 2 लाख कम हो जाएगा, 41 लाख का आपको फ्लैट आएगा। उसी तरह इसमें 2 लाख भी कम होगा, इसमें भी कम होगा, इसमें भी कम होगा, इसमें भी कम होगा। बट you have to do the process fast. Once you give the token, after passing the flat, after seeing the sample flat, after finalizing everything, कि मैंने आज सोच लिया कि अभी मुझे इधर ही लेना है फ्लैट, इसी पुरानी अभितंते फ्लोरा में ही फ्लैट मुझे लेना है, तो उस वक्त moment you give the 72,000, so other process, as you keep on doing faster, you will keep on getting discounts, and this is valid only for certain time till 14th of October. So friend, this was all about Abhitante Flore, which is at Bhavdan in Pune, and for booking and for more advice and for more discussion, you can call on my number 7400138561, and don't forget to like, subscribe and share to this channel, because sharing is caring. And हो सकता है आपको इसकी जरूरत नहीं हो आज फ्लैट की, पर आप किसी और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो आप पास ऑन कर सकते हो, बिकॉज कभी ना कभी किसी ना किसी को जरूरत हो सकती है. You can't say this thing, you know. So always keep on sharing. Sharing is caring. And secondly, when you share something which is inside you, when you share something, जैसे मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, कुछ मेरे पास कुछ नॉलेज है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो there is some universal power that flows from top inside you, and that gives you benefit, and that gives you कोई भी रूप से, कोई भी तरीके से वो आपको, सिर्फ पैसे से नहीं, कोई भी तरीके से आपको बेनिफिट यूनिवर्स दे सकता है. So I believe in this thing. So it's my request to you, please like, subscribe and share to this channel, and see you again with one more Puranik project very soon. Thank you for watching this show. Thank you. Bye bye.